हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट FIA जनरल साइंस और एवरीडे साइंस MCQs दैट विल बी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। हमारा पहला MCQs है कि मायोपिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ सोसीजाव है आइज़। ये आइज़ की एक डिजीज़ है जिसको हम नॉर्मल या इंग्लिश में नियर साइटेडनेस कहते हैं। जिनको नहीं पता सो नियर साइटेडनेस में हमें नज़दीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता। पहले कि ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ सो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्लड। ल्यूकीमिया जो है इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ सो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइज़ और ट्रैकोमा जो है ये आइज़ ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ये एक बैक्टीरिया कॉज करती है जिसका नाम है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। डोली इज़ द नेम ऑफ सो डोली जो है जो पहली शीप क्लोन हुई थी जिसकी क्लोनिंग हुई थी उसका नाम डोली था। सो सी जब है डोली इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप। वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर ए कार इंजन बिकॉज ऑफ इट्स सो सी जॉब है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिनको नहीं पता कि ये टर्म क्या है सो इट मीन्स के 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर कब बढ़ेगी, तब बढ़ेगी जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। ये एब्जॉर्प्शन पावर जो है ये वाटर की बहुत ज़्यादा है। इट इज़ 4184 जाउल्स ऑफ हीट। इन टाइफॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सो इस ड्रग का नाम है क्लोरोमाइसिटिन एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइपी जो है इट इज़ द बैक्टीरिया दैट कॉजेज द टाइफॉइड डिजीज। द स्टेट ऑफ मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट वंस ऑन हेल्थ with complaint of imaginary disorder is known as ये it is known as hypochondria। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें जो है एक बंदे को ठीक होकर भी ऐसा लगता है कि वो बीमार है। ये नाम याद रखिए, हाइपोकॉन्ड्रिया। फुट एंड माउथ डिजीज इज प्रेवेलेंट अमोंग सोसी जब है ऑल ऑफ दीज टू बी स्पेसिफिक कैटल, शीप, गोट एंड हूफ्ड एनिमल। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल इज कॉल्ड सो इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें सॉइल यूज नहीं होता बल्कि ए वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज यूज्ड। व्हाट स्टेप इज एडवाइज्ड टू बी टेकन ड्यूरिंग कार्डियक फेल्योर एज अ फर्स्ट एड सो सी जब है माउथ टू माउथ रिससिटेशन। Although it should be kept in mind that it is not affected in all of the cases, although it is affected in the majority of the cases। जिनको नहीं पता सो ये एक फार्मूला है जिसको 30:2 कहते हैं। इट मीन्स दैट यू हैव टू गिव अ पर्सन 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 माउथ टू माउथ रिससिटेशंस। विटामिन्स डू नॉट एक्ट एज विटामिन डू नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है? बिकॉज विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडीज। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ सो इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। जिनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है सो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन which controls vital processes like heartbeat, breathing and blood pressure. It is a key conduit for nerve signals to and from your body। क्योंकि ये इस जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और व्हेन इट कनेक्ट्स सो इट इज़ ऑन द क्वाइट इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल जंक्शन। सो इसलिए ये क्रिटिकल जो एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करता है। मैक नंबर इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद द स्पीड ऑफ सो मैक नंबर जो है इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद द स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स। जिनको नहीं पता कि मैक नंबर क्या है सो मैक नंबर इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ये इन दोनों चीज़ों का रेशो है। द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज सो इट इज़ नेपच्यून। द 4 प्लैनेट्स जो फारथेस्ट फ्रॉम द सन है इसको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जबकि जो 4 इनर है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हो गया इसको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और नेपट्यून, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्यून ये 4 जो है इसको जो है आउटर प्लैनेट्स कहते हैं।
पहले कहते लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। इनकी लाइफ स्पेन जो होती है इट इज़ 120 डेज। इन आरबीसीज के बारे में दो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर आते हैं कि दे आर बोर्न इन द बोन मेरो and they are then when died they are collected by the spleen and then discharged in the feces। अच्छा, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल इसकी जो है लाइफ स्पेन 13 to 20 डेज है और प्लेटलेट्स की 7 to 10 डेज है। लाइफ स्पेन के बारे में एवरीडे साइंस के पोर्शन में अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। The radioactivity was discovered by, so it was discovered by Becquerel, जिनका पूरा नाम हेनरी बैकुरेल था, and he discovered radioactivity on March 1st 1896, जिन पर इनको फिर जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। द नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड टू हेनरी बैकुरेल एंड मैरी क्यूरी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सो सी जब है ऑक्सीजन, जो कि अर्थ क्रस्ट का अराउंड 46% बनता है। फिर है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, सो सी जब है हाइड्रोजन विच इज 75% ऑफ इट्स नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यूनिवर्स में दो किस्म के मैटर होते हैं, एक नॉर्मल मैटर है और एक डार्क मैटर है। द डार्क मैटर कंस्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ द होल यूनिवर्स। फिर है कि विच प्लैनेट इज़ अ ग्रेट स्पॉट, सो ये जो है द ग्रेट स्पॉट इज़ लोकेटेड ऑन जुपिटर। इट इज़ नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजफुल इन द केमिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, सो सी जब है सिल्वर ब्रोमाइड। Silver bromide is a component of an emulsion which is used to develop a photographic image. पहले which of the following enters human body through skin, so C जब है hookworm। Hookworm enters the body through penetration of the skins and it happens when we walk barefoot on contaminated soil. पहले the dress made out of dash is safest to wear while cooking, सो सी जब है कॉटन या फिर एप्रन। वाई? बिकॉज सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली एंड मेल्ट्स, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया वगैरह जो प्लास्टिक होते हैं, सो दे कैचेस फायर इजीली, इसलिए इट इज़ सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड दैट वी शुड वेयर ड्रेस मेड आउट ऑफ कॉटन और एप्रन एटलीस्ट। फिर है गैसोहोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड डैश, सो सी जब है इथाइल अल्कोहल। गैसोहोल में जो है 90% गैसोलीन होता है और 10% इथाइल अल्कोहल होता है। फिर है कि ओजोन इज इम्पोर्टेंट इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है इट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फेयर। वाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बिना एब्जॉर्ब हुए और बिना फिल्टर हुए हमारे अर्थ पर पहुंच जाती है तो फिर हमें जो है स्किन कैंसर और स्किन डिजीज़ लगने का खर्चा है अलॉन्ग विद अदर डिजीज़। Who is considered to be the inventor of the WWW? WWW stands for World Wide Web. ये जो है it was done by Sir Timothy John Berners-Lee, जिनको commonly and famously Tim BL के नाम से भी जाना जाता है। He was an English computer scientist. For a fixed mass of gas at constant temperature, if we decrease the volume, the pressure will increase, because volume is inversely proportional to pressure. So if we decrease the pressure, the volume will increase, and if we increase the volume, the pressure will decrease. The double helix structure of DNA was discovered by जब है रोजालिंड फ्रैंकलिन। It was discovered in 1953। जिस फोटो में ये जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, द फोटो दैट वाज टेकन इज फेमसली नोन एज फोटो 51। एरेक्नोफोबिया इज द fear of जब है स्पाइडर, इट इज द fear of spiders and other arachnids such as scorpions and ticks etc. RBCs are also called, they are also called as erythrocytes, जबकि WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। RBC जो है ये तो ब्लड हो गया, वाइट ब्लड सेल हमारे जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, और प्लेटलेट्स जो होती है इट वर्क्स मेनली इन द ब्लड क्लॉटिंग। The plants growing on other plants or objects are called as, they are known as epiphytes, and they use other plants or objects merely for physical support. Sunspots were discovered by, it was discovered by Galileo Galilei,
and it was done in his famous letters on sunspot in 1612, which was a pamphlet, and it was published in 1613 probably. Which of the following is commonly present in the acids? So C jab hai hydrogen. Why it is present in the acids? Because the reaction usually involves the exchange of protons. Rickets is caused due to the deficiency of, so it is caused due to the deficiency of vitamin D. In children, it is caused mainly due to the deficiency of vitamin D and calcium. Why? Because vitamin D is the key factor in absorbing calcium in a body. अगर एक body में vitamin D नहीं होगा तो वो calcium कैसे absorb करेगा? Which one is the thinnest earth layer? So C जवाब है crust, and to be specific, it is the oceanic crust. क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो हमारे नॉर्मल क्रस्ट से भी ज़्यादा थिन होता है. फिर है कि हेवर्जियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन, सो इट आर प्रेजेंट इन बोन्स. अच्छा, जिनको नहीं पता कि व्हाट आर हेवर्जियन कैनाल्स, सो दे आर अ सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ बोन, मेनली द कॉर्टिकल बोन. फिर है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, सो सी जवाब है कॉलम. The density of water is, so it is 1 gram per cm cube. Which device converts chemical energy into electrical energy? So these are batteries जिनमें chemical होता है, then it is converted into electrical energy, और फिर जो है वो chemical जो है it is left useless, फिर हम बैटरी को फेंक देते हैं. Sun is a, so सी जवाब है star. Every human body contains dash liter of blood, so सी जवाब है 5 liters of blood. What is the SI unit of pressure? So the SI unit of pressure is Pascal. The purest form of water is obtained from, so it is obtained from heavy rains because it comes directly from the cloud. A green pigment found in the plants is called, so it is called chlorophyll, और यही वो pigment है जो कि जिसकी मदद से प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. Health hazard floods are responsible for the spread of, so these are responsible for the spread of cholera. क्योंकि गंदा पानी होता है और बहुत सारे मसले होते हैं, so waterborne disease जो है वो फैलते हैं, and cholera is also a waterborne disease. फिर है कि they live in a large well-organized family groups and are therefore called social insects. They are called honeybees क्योंकि like the human society they have this division of labor and they have this society. Though insects as a honeybee and ants they have proper colonies and they have a queen, worker वगैरह, लेकिन honeybees have a more sophisticated division of labor. For pasteurization by the flash method, milk is heated to the temperature of, अच्छा एक फ्लैश मेथड है जिससे मिल्क की पेस्चराइजेशन होती है. It is done by heating the milk to the temperature of 72 degrees Celsius. फिर है कि isohyets are the lines drawn on a map connecting points having dash in a given period. दो ऐसी जगह जहां पर equal rainfall हुई होती है उनको फिर मिलाया जाता है, and these lines are called isohyets. So सी जवाब है equal rainfall. Ice cubes are floating in a glass of water. When ice melts, the water level in the glass remains dash, so it remains unchanged. क्योंकि water level तभी बढ़ गया था जब हमने glass में ice cube डाली थी, and now it will remain the same. In what shape can a 1 kg plastic sheet be molded to have minimum surface area? So ये हो सकता है अगर हम उस plastic sheet को spherical form में fold करें, so it will have a minimum surface area. Sound waves are converted into electrical energy and then reconverted into sound after transmission in a dash. So सी जवाब है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में हम साउंड एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो अगेन जो है ट्रांसमिट फिर कन्वर्ट होती है इनटू साउंड एनर्जी एंड देन इट्स गिव्स इट्स आउटपुट. Which of the following is a weed killer? So it is methyl salicylate. Gravitational pull of the moon and sun causes high tides at antipodes. Influence of genes in controlling the activity of living organism is through सी जवाब है hormones. The richest source of omega 3 is, so omega 3 की richest source है it is fish oil. omega 3 बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है.
ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू? सो सी जवाब है ब्लड। कार्डियक मसल फाइबर्स आर डैश, सो दे आर स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री। सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यूज आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। किडनी के नेफ्रॉन्स कहते हैं। इस तरीके से लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया न्यूरॉन्स है। द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द सन इज, सो सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें दो न्यूक्लियाई जो है जोड़कर एक थर्ड न्यूक्लियाई बनाते हैं और हीट जो है उसको रिलीज करते हैं। रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, द वन इज फिजन एंड द अदर इज फ्यूजन। फ्यूजन में दो मिलकर तीसरा बनाते हैं और फिजन में जो है एक तकसीम होकर दो बनाते हैं। The longest cell in human body is, so the longest cell in human body is the nerve cell. Heart patient should avoid taking excess of, so जो fats है वो heart patient के लिए मना है, especially जो bad fats है। Hepatitis and jaundice are the diseases of, so these are the diseases of liver. Plant absorbs water from the soil by, so they absorb water through their roots by a process that is known as osmosis. As per eating habits, squirrels are, so they are omnivorous. लेकिन ज़्यादातर वो nuts वगैरह खाते हैं। Which of the following is an infectious disease? So blindness is an infectious disease. Vitamin B12 is found in, so vitamin B12 is found in fish and meat. The total number of muscles in human body is, so हमारे जिस्म में टोटल मसल्स की तादाद 639 है, जबकि अगर हम बोन्स की बात करें सो इट इज़ 206। लेकिन अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, सो उनमें तकरीबन 300 के करीब होते हैं। वाई इज़ दैट? क्योंकि डिलीवरी में स्मॉल बोन जो है इट हेल्प्स इन द ईजी डिलीवरी। अगर उनमें भी 206 हड्डियाँ होती, सो द हेड बोन्स दे विल बी लाइक हार्ड एंड सो विल बी द बॉडी बोन्स, तो डिलीवरी में फिर प्रॉब्लम होती, कॉम्प्लिकेशंस होती। Which of the following enzymes hydrolysis starch into reducing sugars? So सी जब है amylases। अच्छा, एंजाइम्स की पहचान ऐसी करनी है कि इनके आखिर में लेज आएगा, एक्सेप्ट फॉर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जिनके आखिर में लेज नहीं आता, बाकी आप जितने भी एंजाइम्स देखते हैं इनके सब के आखिर में एज लेज वगैरह आते हैं। Why vitamin A is necessary? So vitamin A is necessary to prevent night blindness. Sweat glands occur all over the body except, दो जगह ऐसी है ह्यूमन बॉडी पर मेल में जहाँ पर जो है sweat glands नहीं होते, so they are on the lips and glans penis. Newton is the unit of, so Newton is the unit of force. The internal antenna of transistor is made of, so it is made up of ferrochrome. Amoeba, malarial parasites and typhoid bacillus are collectively called, so they are collectively called protozoa. Aspirin is a pain reliever. Radiocarbon dating is a process used to know the age of fossils. फॉसिल जैसे कि अगर हम देखें मम्मीज़ वगैरह हो गए या फिर कुछ ऐसी बोन्स निकलते हैं जो मर चुके हैं सदियों पहले, जैसे कि अगर हम देख लें सहरा के नीचे से एक शहर निकलता है, फिर वहाँ की कार्बन डेटिंग होती है, वहाँ जो फॉसिल निकलते हैं फिर उसकी एज मालूम होती है। सो इट इज़ ऑल दैट। एन यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप। एक यूनिवर्सल डोनर की ब्लड ग्रुप होती है O, एंड टू बी स्पेसिफिक इट इज़ O नेगेटिव, क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता है कि इट इज़ O पॉजिटिव और O नेगेटिव एंड नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। सो उसमें फिर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज़ O नेगेटिव। Retina in the eye acts as a dash in the camera. So retina in the eye acts as a film in the camera, and it is the most sensitive part of the eye. The substance generally used in the tip of safety match stick is, जो सेफ्टी मैच स्टिक होती है, माचिस की तीली होती है, उसके टिप पर कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? सो इट इज एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। The process by which metal surface is coated with a thin layer of zinc is called, so this process is known as galvanizing. Pere the milk of animal fed on grass contains large amount of fat in, जो समर होती है, सो समर में इन एनिमल्स का जो मिल्क होता है इट कंटेन्स
large amount of fat. So C jawab hai summer. Kilowatt is the unit of, so kilowatt is the unit of power. Metal used in voltaic cells are, so the metals that are used are zinc and copper. Which of the following disease is caused by virus? So smallpox is caused by virus. Short-sightedness can be corrected by using, so they can be corrected by using concave lens, while long-sightedness can be corrected by using convex lens. ये दोनों चीज़ें आपने याद रखी हैं. ECG is used for the diagnosis of ailment of, so ECG is used for diagnosis of ailment of heart, जबकि EEG जो होती है वो ब्रेन के लिए होती है. The most important stimulant in tea leaves is, so जो टी लीव्स में stimulant होता है it is caffeine. When a person enters a dark room from bright light, he is not able to see clearly for a little while because कुछ देर के लिए जब हम अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमारी आंखें बहुत ज़्यादा काली होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाता है. Why is that? Because the iris is unable to dilate the pupil immediately. आयरिस और पीपल जो होता है ये हमारे आइज के दो पार्ट है. What is the average adult pulse rate? So the average pulse rate is 72 to 80 beats per minute. लेकिन most commonly it is 72 beats per minute. The beautiful color patterns exhibited by a peacock in its tail's feathers are due to, जो मोर होती है उसके पंखों में जो कलर्स होते हैं दे आर दिस पैटर्न ब्यूटीफुल. ये किस वजह होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. A lake starts freezing because of cold atmosphere. It will first freeze dash. So it will first freeze at the top surface. सबसे पहले top surface freeze होता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता जाता है. An astronaut inside a spacecraft is in a state of weightlessness. This implies that both the astronaut and the spacecraft are in a dash. So it implies that both are in a free falling state. क्योंकि वहाँ पर weightlessness है, gravity नहीं है, so they are in a free falling state. An iceberg is floating in sea. How much of its mass will remain above the surface of water? So 1/10 of its mass will remain outside the surface of water, while 9 out of 10 of its mass will remain inside. Most of the ozone in the atmosphere is concentrated in the, so it is concentrated in the stratosphere. क्योंकि अगर हम अभी हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें अगर ओजोन आ जाए, so it will cause us breathing problems, it will cause the rubber to crack. Similarly it will cause other problems, while in the stratosphere it is good for the humans क्योंकि वो ultraviolet rays को filter और absorb करती है. Cow's milk contains how much amount of water in terms of percentage? So एक cows के milk में 80% जो है water होता है, और यहाँ पर जो दूध वाले हैं इसको 90% तक भी पहुँचा देते हैं, लेकिन naturally it contains 80% of water. TV transmission cannot cover a very large area because the shape of the earth is, so it is because the shape of the earth is spherical. इसी वजह से TV transmission जो है it cannot cover a large surface of area, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स वगैरह ये जो है ये लगे हुए होते हैं. हमारे स्पेस में इस वक्त तकरीबन 7100 समथिंग सैटेलाइट्स है. The greenhouse effect is caused by an excess of, so it is caused by an excess of carbon dioxide. Birds can also fly in dark because they are capable of taking the help of, so ये जो है एक सोनार एक क्रिएशन होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये रिसीव करता है, and that is why they are able to fly in the dark. Dash is a technology that uses a coating to reduce the visibility of an aircraft on radar. So this technology is used as stealth technology. Stealth technology यूज होती है, सबमरीन यूज करते हैं to गायब करने के लिए, टू मेक देमसेल्फ इनविजिबल एंड डिसअपीयर इन वाटर. एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं टू मेक देमसेल्फ डिसअपीयर इन द स्काइज. सो इट इज़ द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द feathers in bird is to, so it is to provide striking surface to the wings for flying.
The rear view mirror of a motor vehicle is, so it is convex. The sun appears red at sunrise and sunset while it appears white at noon. Why is that? So it is because of the scattering of lights in the molecules. Lead balls falls through water more slowly than through air because of the viscous force in water. A train goes past a railway station at a high speed. A young boy standing on the edge of the platform is likely to, so see jab hai, he is likely to fall towards the train. In order to prevent the corrosion of iron pipes, they are often coated with a layer of zinc. This process is termed as galvanization. The absorption of ink by blotting paper involves the capillary action phenomenon क्योंकि the ink goes to the capillaries of the paper. A satellite moving around the earth with a uniform speed it will be having a uniform acceleration also. For being able to see a 3-dimensional picture we have to use, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेरियोस्कोप. Water has maximum density at 4 degrees Celsius, and it is also liquid at 4 degrees Celsius while it is solid at 0 degrees Celsius. The theory of expanding universe was first propounded by Hubble, जिनके नाम पर अभी एक टेलीस्कोप भी है. Who proposed this concept? All motion is relative, सी जवाब है एल्बर्ट आइंस्टाइन. और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्तिताम को पहुंचती है. अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए. See you soon in next video inshallah. Till then, Allah Hafiz and goodbye.